નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, એનસી ક્લાસીસ ચેનલમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, જો તમે ચેનલમાં નવા હોય તો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે આવતીકાલે જે હિન્દીનું પ્રશ્નપત્ર આપણે 12 તારીખે હતું મોકૂફ રાખવામાં આવ્યું હતું, એ તમારે કાલે છે, તો એની બ્લુ પ્રિન્ટ તમારી સમક્ષ રજૂ થઈ ગઈ છે। જો તમે ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। હવે મિત્રો, આ બ્લુ પ્રિન્ટની અંદર અમે સોલ્યુશન કરીશું નહીં, તમારે જાતે સોલ્યુશન કરવાનું છે। હા, તમારે ખુદ કેટલા બ્લુ પ્રિન્ટમાં માર્ક્સ આવે છે જાતે તૈયારી સાથે એ તમારે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવવાનું છે, તો જરૂર જણાવજો। નંબર 1, हरियाली का सपना कुआं से के फूल में कब बदल जाता है। तो જે 4 વિકલ્પો આપ્યા છે તેમાંથી તમારે એક વિકલ્પ રાइट કરવાનો છે। नंबर 2, रामू ने घोड़ी का क्या नाम बताया था। ये पण तमने हाव इजी है, आईएमपी से घणुं खरुं आमांथी पूछाशे विद्यार्थी मित्रों। पछी नंबर 3, मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था। मदननुं घर जे छे कई जग्याए हतुं एम पोतानुं गांव। पछी तमारे वाक्योनी अंदर सारांश जे वाक्योनी अंदर वाक्य सारांश चूनकर पूरा वाक्य जे फरीथी लखवानुं छे, ए पण तमारे 3 विकल्पो छे एमांथी लखवानुं छे। पछी तमारे न्याय मंत्री का साहित्य प्रकार એટલે કે જે ખાલી જગ્યાઓ તમને અહીંયા આપી છે, કારણ કે न्याय मंत्री कहानी હતી કે એકાંકી હતી એ તમારે લખવાનું છે। मैं खाली जगह के लिए नाच सकती हूँ, बराबर, विजय के लिए के स्वराज के लिए जे आवे ते। रविन्द्रनाथ ટાગોર ने खाली जगह पुरस्कार मिला था। भाई तमारे एक वाक्यना प्रश्नों છે, तो તમે અહીંયા જોઈ શકો છો। एक वाक्यना प्रश्न, बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था। थानेदार की क्या विशेषता थी। परदेशी कौन था, बराबर। संपूर्ण जे ब्लूप्रिंट ने आधारित प्रश्नपत्रों हता अने आपणुं नवुं प्रश्न पद्धति प्रमाणेनुं जे संपूर्ण सोल्यूशन तो आपणे नथी कर्युं, पण आवतीकाले जे प्रश्नपत्र मूकीशुं ए सोल्यूशन करीने चोक्कस मूकीशुं। आ तमारी जे आईक्यू पावर जे तमारो छे ए तपासवा माटे तमारे जाते तैयार करवानुं छे। तमने केटલું आवड़े छे, तमारे पण नवनीतनो के पुस्तकनो उपयोग नहीं करवानो। जाते तैयार करी अने पछी ज एमांथी तमारे आने प्रश्न जोवानो छे, खोटो जे जवाब पड़े छे ते। पछी विभाग बी छे, तो विभाग बी नी अंदर पण तमने विकल्पो आपेला हशे, बराबर। पछी तमारे फरी जे आ एक वाक्यना जे छे आ पण वाक्य फरीथी बनाववानुं छे, विकल्प आधारित छे। आमां आमां कंई फरक नथी, बंने विकल्प आधारित छे, बराबर विद्यार्थी मित्रों। भाई तमारे फरी खाली जग्या पूरवानी थी, भाई फरी वार एक वाक्य में उत्तर लखवाना है, भाई मोटा प्रश्नों से, भाई फकरा उपरथी जवाब है, भाई विभाग सी है, कहावत जे है ये तमारे समझावानी है। 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरे की रात, मार के पीछे भूत भागे। पछी ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। पछी आगळ वात करी छे धर्म से डरने वाला शब्द समूह जे तमारे लखवानो हतो, बराबर। एमांथी जवाब आपवानो छे, आमांथी आमांथी। थोड़े समय का सुख पाना, तो एमांथी पण जवाब आपवानो छे। आ वखते प्रश्नपत्र तमारे एकदम सारूं अने इजी पूछाशे, एटली तो 100% गेरंटी छे। अने आमांथी घणुं खरुं पूछाशे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपणी आ चेनलने जो सब्सक्राइब न करी होय, तमारे भाववाचक संज्ञा छे, कर्तुवाचक संज्ञा छे, कवि ने कविता लिखी लखाई आवशे एवी रीते, बराबर। हूँ सोल्व नहीं करूँ आज। राधा अने कृष्ण, पंचवटी, राजपुत्र ए समास तमारे ओळखावानो छे। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास कौन सा है, बंनेनुं जोड़कुं होय। राधा अने कृष्ण तमने खबर छे। पण विभाग डी नी अंदर तमारे फकरा उपर जवाब आपवाना छे अने પછી તમારે પત્ર પણ લખવાનો છે। આપણે પત્ર જો તમને ખબર ન હોય તો મૂકેલું છે આપણી ચેનલની અંદર, જોઈ શકો છો। પછી 55 માં 150 શબ્દોમાં નિબંધ લખવાનો છે। ભારત દેશ મેરા પ્રિય પુસ્તક પણ આપણું આઈએમપી છે, બરાબર। આ વખતે તમારે મેરા પ્રિય તહેવાર કે મેરા પ્રિય પુસ્તક, બરાબર, આઈએમપી એટલે મોસ્ટ આઈએમપી છે, તમારી પરીક્ષામાં પૂછાશે 100%। જો તમે ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। ફરી નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીશું। જય હિન્દ, જય ભારત।